हृदय से आशीर्वाद डॉक्टर शिखा जी, आपके महान मनीषियों, यशस्वी वक्ताओं, उनको सबको प्रणाम। डॉक्टर श्री खत्री जी को प्रणाम। और मैं उनकी विद्वतापूर्ण बातें सुन करके मैं आश्वासन देना चाहूंगा, मैं डॉक्टर खत्री को आमंत्रित करूंगा अपने यूनिवर्सिटी में, हमारे बच्चों का भी मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हैव अ ग्रेट इवेंट डॉक्टर शिखा जी। बहुत बहुत प्रणाम खत्री जी को, विद्वान वक्ताओं को, पीएन गर्ग साहब को, आशिमा जी को, IOCL को, सभी को जिन्होंने इस यज्ञ में सहभागिता करके अपने आप को धन्य किया, कुल और वंश को धन्य किया। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन I don't know, I'm treating as घंटों की आवाज सर के एक इस प्रेरणादायक, जो हमेशा सिर्फ इसको कहने की जरूरत नहीं है, सर का बोलना प्रेरणादायक होता है। सर आप देखिए किस तरह से जब आपने क्लैपिंग की आवाज अनिल जी से सुनी है, तो मैं समझ पा रही हूँ, आप उनके चेहरे का ग्लो, शुभम के चेहरे का ग्लो देखिए, हम सब का ग्लो देखिए जब आप होते हैं, और जब सर बीएन गर्ग सर होते हैं, आशमा मैम होती है, तो हमें मालूम है कि अब इसको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। सर आप प्रेरणा का संचार करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आज आप बहुत बिजी हैं और आपने इसके बावजूद भी टाइम दिया है, और इसलिए कि ये आप हमेशा इसको मेंटोर करते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद जो मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे जो पूरे आ रही हूँ, जो हमारे साथी हैं, मैं उनको उनके जो सर्वोच्च हैं, हमारे शीर्षस्थ पे IOCL के विद्यमान हैं संजीव कक्कड़ जी, जिनको मैं आमंत्रित करूं, पर उसके पहले मैं एक दो बातें कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो इस यज्ञ में इस वक्त 7 स्कूल, 4 जो राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके स्कूल्स के टीचर्स और उनके बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं खास इसलिए मैं उनको बहुत स्वागत करती हूँ, और खास इसलिए मैं श्री संजीव कक्कड़ जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि सर आपके इस एसोसिएशन से इतने सारे लोगों तक ये एनवायरमेंट अवेयरनेस की बात पहुंच रही है। मैं फिर से धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ IOCL को। और इससे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करूँ, मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहती हूँ अपने सभी ऑडियंस को। श्री संजीव कक्कड़ जी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड स्टेट हेड, इंडियन ऑयल एंड स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर of oil marketing company in the state of UP. He is 1987 batch MTech in chemical engineering from the prestigious IIT Kanpur. He joined Indian Oil Corporation Limited, which is the downstream major of the country, in the year 1987 as a management trainee, and rose to the rank of executive director, a fulfilling career spanning over 3 decades, more than 3 decades. Currently, he is heading Indian Oil functioning as ED and state head UPSO1, encompassing entire central and eastern UP. He is also the state level coordinator for oil marketing companies in Uttar Pradesh. He is called a retail man in Indian Oil with over 3 decades of rich retail experience in the corporation. He has headed almost all the retail verticals in Indian Oil and is very well conversant with various regional dynamics of retail business
of the oil fraternity across the length and breadth of the country. Mr. Kakkar has played a pivotal role in retail transformation of Indian Oil with the retail automation and quality and quantity assurance to the end consumer. He was a member of the team from Indian Oil, which was responsible for giving shape to the ambitious and face-lifting retail transformation project, where McKinsey and Company was the knowledge partner. He has core values of Indian Oil of care, innovation, passion, and trust in his DNA, which guides him to strive relentlessly for achieving excellence and ensuring that Indian Oil organization. The Energy of India is the most loved, trusted, and the customer-centric organization across the globe. Mr. Kakkar is an avid learner and is passionate about the oil and gas industry. He loves reading and has devoted, or rather, decorated diploma in strategic leadership from Melbourne University, Australia. So I invite you, sir, here to share your thoughts on how IOCL is dedicating its services for the cause of environment. So over to you. Thank you, Dr. Shikha Tripathi. Thanks for the good words and for the entire introduction. Well, I am really enamored by the introduction and the work which Swayam Siddha is doing, and the work which normally very few organizations do. So a very good morning and namaskar to all of you. Well, I would just like to quote the one quote from Leo Tolstoy, that one of the first conditions of happiness is that the link between the man and nature shall never be broken. Respected Dr. Shikha Tripathi, Dr. Vikram Singh ji, IPS, Dr. Rakesh Khatri ji, fondly known as the Nestman of India, Mr. Ashima Singh ji, IRTS, Mr. V.N. Garg, IS retired, and my dear young friends and future of Atmanirbhar Bharat, a very warm welcome and good morning to all of you from my side and from the Indian Oil family. In Indian Oil, as Dr. Shikha has said, yes, our basic core values are the care, innovation, passion, and trust. And with the focus on environment and sustainability, it is right on the top of our responsibility index, and we do care for the environment. Indian Oil is fully focused on offering cleaner conventional fuels while expanding renewable energy footprints and exploring new energy pathways. In line with the government India vision, Indian Oil is spearheading various green initiatives like development of infrastructure for utilizing natural gas in all refineries. We are the first country in the world which has launched BS6 products. The ethanol blending to the tune of around 11% we are doing in our country. We are venturing into CBG and other things. Recently, Dr. Shikha, on 5th June 2022, we celebrated the World Environmental Day with the theme, Only One Earth. I think we missed the opportunity. We should have joined hands on during this event. And I would just like to share the few statistics with all of you, which I want to reiterate, though most of you must be knowing. We are using the equivalent of 1.6 Earth to maintain our current way of life, and ecosystems cannot keep us with our demands. To limit the global warming to 1.5 degrees centigrade by the end of the century, we must halve annual greenhouse gas emissions by 2030. Restoring 15% of the converted lands while stopping further conversions of natural ecosystem can prevent 60% of expected species extinctions. Indian Oil is moving ahead in this direction. We have adopted
one on rhino as our mascot, and recently we have pledged to bring the almost extinct cheetah back to India. We have given around 50,000 crores to the government for this. And as you are all aware that air pollution, it causes 7 million premature deaths every year, 1 in 9 of all deaths. 9 out of the 10 people breathe unclean air, making it most significant environment health risk of our time. For this, Indian Oil is again venturing into the new Japanese technology, which is called Miyawaki forestation technique for building dense native forest in a limited available land area. This has resulted into a plantation of 30 times denser than the usual forest. We have recently on this World Environment Day set up 2 such forests, one in our Lucknow terminal in Amavati and at UPSRTC campus in Gomti Nagar. And we are planning many more locations in UP. Now, let me tell you how Indian Oil is going ahead with the environmental protection. There are 23 refineries in India, out of which 18 are owned by the public sectors, and out of these 18, 11 are of Indian Oil. All our refineries are ISO certified for sustainable development and environment. We have laid down waste water management system at all our refineries for segregating the various wastewater. We have a water harvesting system in the form of rainwater harvesting structures, which have been put in all refineries, their township, marketing, and the pipeline locations. We have advanced treatment systems like ultra filtration, reverse osmosis, etc., to use the convert treated effluent to demineralize water or for use in cooling towers as makeup water. Then I'll come to the air pollution. In Indian Oil, utmost attention is given to control to reduce the emissions in our refineries. Major sources of air emissions are the flue gases from boilers, heaters, FCC, regenerators, sulfur recovery plants, etc. Hydrocarbon leaks and evaporation during storage, handling and transportation of petroleum products and crude oil are sources of fugitive emissions. We have also developed green belts and ecological parks. Over 18 lakh trees have already adorned our green belts. Ecological parks have been developed at refineries with lush green cover that serves as natural habitat for a large number of birds. More than 300 species of resident and migratory birds thrive in these eco parks. Over 285 species of native and exotic plants and trees are grown there. Further, we have the Green Initiative portals. We always desist in using the papers. We always go for the digital mode of conversation or digital mode of payment and all other things. We all every time we encourage paperless thing. Now, I would like to tell you that we are in a big time into green fuels and that's very economic, environment friendly. Let me take you to the few differentiated fuels which Indian Oil has launched in last 2 to 3 years, which are very environment friendly. Well, you would be aware that before this, the normal petrol, which was being marketed in the company in the India, was of octane 87. Then we graduated to 91 octane. Then now, Indian Oil is the first company which has come up with XP100, that is called 100 octane fuel, and we are the 6th country in the entire world which has come out with this eco-friendly fuel, which is 100 octane.
This reduces the carbon emissions significantly and reduces the carcinogenic emissions with very low aromatic content and suspended particulate matter, and it improves the air quality also. Though it's costly, but it has value for money. I would say that yes, the cost of XP100, that is 100 octane, is 160 rupees a liter, which is around 60 rupees costlier than the normal petrol. But the value which you get out of this petrol is much more. You have the extra driving comfort, you have the extra this thing. Efficiency is improved and environment is also protected. On similar lines, we have come out with another fuel called Extra Premium 95, which is very, very affordable, around 3.5 rupees costlier than the normal petrol. But this is again very eco-friendly, and it reduces the emission of carbon monoxide by 44%, hydrocarbon emission by 13%, and increases your torque by around 20%. So it's again a very good fuel. On similar lines, we have also introduced Extra Green. This is again an eco-friendly diesel which we have launched recently, and it gives an additional mileage of 5 to 6%, and though the cost is only 3 to 4 rupees costlier than it. So then you again get the value for money, that if you are spending extra, you get a better fuel and an eco-friendly fuel. On a petrol front, I would just like to add one thing more, that yes, we have now launched ethanol blended petrol. We are the UP is the only state which is contributing maximum to the to this blending. We are blending around 11% of ethanol. Again, it's a very environment friendly fuel. The octane rating goes high, and the government is also helped because the imports exchequer is also reduced. So these are the few things where IOC is taking good care of the environment. Besides this, we have also ventured into compressed biogas, CBG. We call it CBG. This is the biogas which is produced naturally through a process of anaerobic decomposition from waste biomass, sources like agriculture residue, cattle dung, sugarcane pressed mud, municipal solid waste, sewage treatment plant waste, etc. We have recently going to set up one 2G plant at Gorakhpur at the cost of around 180 crores. Probably the group would be aware that a week back we had dedicated to the nation another 2G plant at our Panipat refinery, which was launched by our Honorable Prime Minister. So here also the compressed biogas which we produce, this replaces the CNG in automotive and in industrial sector and in the commercial use, and the CBG will be used in will be in great demand. And on CBG front, we have issued around more than 400 LOIs, and in UP alone, we have set up 3 CBG plants, and the CNG which is being produced, we are selling it as CNG in the market. Now coming to biodiesel, which is another eco-friendly fuel. This is an alternative fuel having diesel-like properties synthesized by a simple chemical reaction of alcohols and vegetable oils. Mainly the palm oils, soybean, rapeseed oils is being used. So the 5 to 10% of this oil is being blended into the normal diesel, and the experiments are going on with Indian Railways, Haryana Roadways, and with the UPSRTC also. Besides the fossil fuels,
there is a great emphasis from the government of promoting the EV vehicles. So the EV charging facilities and the battery swapping stations we have installed at around 300 retail outlets in this state of UP, and we are partnering with Rajasthan Electronic, NTPC, Power Grid, and all DISCOM, so that the EV charging facility is available at retail outlets. But the problem here is that though this eco-friendly EV charging facility we are providing, but the ecosystem has not developed as yet. We are following up with the various OEMs that yes, they should come out with the vehicles which have that EVs. The only problem with the OEMs is that they are not economically viable. Tata has come out with the Vertigo. Mahindra has come out with one such vehicle, but Tata and Mahindra, they have shelved the most common variant which they had launched, but still the Tata Electra and Zipton is another Tata variant which they are going to launch, and hopefully if the solution is viable in coming years, we will see that yes, there will be a great shift on the EV vehicles also. Besides this, battery swappings, it has come up in a big way. The two-wheelers and the three-wheelers, or the e-rickshaw, which we normally call, they have this battery swapping facilities, and we have one JV with Sun Mobility, and in hubs where we have the good ecosystem of the EVs, we have provided the battery swapping facilities. Now the other environment-friendly fuel, which is the solarization. We are again venturing very fast into the solarization. Our more than 60% retail outlets are having solarization facility for our in-house consumption, and we are also helping the government in developing the solar parks also. So towards the end, I would just like to reiterate the points which our Honorable Prime Minister had said in the COP26 summit at Glasgow. One is that India will make its fossil energy capacity, non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. We are working in this direction. India will meet 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030. India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now till 2030. By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by more than 45%. And by 2070, India will achieve the target of net zero carbon emissions. I think it's a huge target which our Honorable Prime Minister has given to all of us. So these 5 Panchamrits will be an unprecedented contribution of India to the climate action. So in all, India is making its effort through the above initiatives to contribute in achieving our Honorable Prime Minister's vision of cleaner and greener India. Through this platform, I urge all of you to make a mark and ensure your contribution towards making Mother Earth cleaner, greener, and a better place to live. So in the end, I would like to thank all of you for lending a patient ear to my address. Seeing your enthusiasm, I am confident that the India of tomorrow has a bright future, and as it would be nurtured in the hands of the budding young professionals listening to me, and would like to once again reiterate India's commitment for a cleaner and greener future with sustainability as our guiding force. I would also like to thank Swayam Siddha organization for taking this initiative for this environment education. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. Thank you so much, sir. In fact,
The details that you gave were extremely useful to us, because otherwise it is something which we wouldn't be knowing. The way you shared was in a language which was understandable to us, and also we were able to get as to how IOCL, through its intervention, is reaching out to make our life happy and sustainable, which is something very important. And the commitment of IOCL is known to all of us, and I'm personally, on behalf of Swayam Siddha, is knowing it for last 5 years, which is including this year as well. So thank you so much, sir, for your very, very enlightening speech and address to all of us and sharing your thoughts. So thanking you once again. I just wanted to add, which I just missed out, is that we also have Mr. Shobhit Narayan with us in the entire event. Whenever, if there is any time permits to us, then I'll ask him to just spare one or two lines. So Shobhit Narayan is a life coach, but then he is spiritually connected. He is a devotee of Vivekanand Ramakrishna Paramhans mission. And then he is doing a great work so far as our mental health is concerned. So I'll connect to him during the event, maybe for 1 minute or so, not now, but I welcome him to this event. Now, before we move to our next man of India, whose just conversation over phone makes me to listen to him to, long, is so great. But before I invite him, there is somebody who's brought birds through his sign tune. The sign tune man of India is Dr. Pradeep Srivastava. He is here just for a few minutes. We are requesting for at least 5 minutes if he is going to share something about the birds, and then we'll connect to the next man. So if Dr. Pradeep Srivastava is there, I'll request him to be at least just to share his Dr. Srivastava. Good morning. Yes, good morning to everybody from India to Canada. I could see Shubham and Anil Shuklaji all the way. And it is great to see all the great people, and my salute to Rakesh Khatri ji. आप एक बहुत बड़ा नोबेल काम कर रहे हैं. Luckily, I have only 8 minutes because I have another lecture, then another program. तो मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ कर दीजिए प्लीज. वाई बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. आपने कभी सोचा नहीं होगा. और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि 1958 से 1962 तक चीन के एक महान व्यक्तित्व थे माओ सेतुंग, और उन्होंने ऑर्डर किया कि फसल या अनाज हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए 4 हमें पेस्ट को, ऐसे प्राणियों को जो हमारी फसल को हानि पहुंचाते हैं, उनको चाइना से खत्म कर देना है. तो उसमें पहला नाम था चूहा, फिर मच्छर, फिर स्पैरो और फ्लाइज. मच्छर कैसे था मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन ये 4 उन्होंने प्राणी चुने जिनको चीन के निवासियों से उन्होंने कहा इनको मार डालना है. और जब एक गौरैया मार के ले जाते थे तो सरकार इनाम भी देती. पूरा चाइना के लोग लग गए. बहुत बढ़िया मौका था. लाखों गौरैया, करोड़ों गौरैया मार दी. लेकिन उसके बाद तबाही शुरू हुई. तबाही क्या थी? जब गौरैया मर गई तो वो जो खेत में उन कीड़ों को खाती थी जो फसल को नुकसान पहुंचाते थे, वो कीड़े बढ़ गए. और नतीजा क्या हुआ कि वहां अकाल पड़ा और लगभग 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग भूखे मर गए चाइना में, क्योंकि उन्होंने गलती से गौरैया को मार दिया था, बगैर ये सोचे समझे कि गौरैया जितना हमें शायद नुकसान करती है उससे कई गुना ज्यादा फायदा करती है. और उसके बाद आपको जान के ताज्जुब होगा कि चाइना की सरकार को 2,50,000 गौरैया इंपोर्ट करनी पड़ी रशिया से कि चाइना में गौरैया बढ़े. तो आप सोचिए एक छोटी सी गौरैया का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है. ये आपके सामने एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है किंगफिशर. अगर ये चिड़िया ना होती तो आज बुलेट ट्रेन दुनिया में नहीं चल रही थी. और आपको बताएं, जब बुलेट ट्रेन बनी पहले तो उसका नाम था शिंकानसेन, जो जापान में बनी. 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको चलना था, लेकिन इसको 22 सुरंगों से गुजरना था, टनल से. और जब 300 किलोमीटर की स्पीड पे ये बुलेट ट्रेन गुजरी तो लगा कि
इतने जोर से साउंड ब्लास्ट हुआ कि बिल्डिंगों के शीशे टूट गए, लोगों को लगे कान के पर्दे फट जाएंगे, और पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन 6-7 महीने बाद और लगभग 1 साल बीत गए, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो एक जापानीज रेलवे इंजीनियर था, उसने वॉच किया कि जब किंगफिशर डाइव मारती है मछली पकड़ने के लिए अगर 10 बार, तो 10 बार वो मछली पकड़ लेती है, लेकिन दूसरी चिड़िया जिसकी चोंच गोल होती है वो 5 ही 6 बार पकड़ पाती है। एंड ही गॉट एन आइडिया। व्हाट वाज द आइडिया? टू चेंज द शेप ऑफ बुलेट ट्रेन इंजन लाइक द बीक ऑफ दिस किंगफिशर। और इससे क्या हुआ कि वो साउंड की प्रॉब्लम चली गई, 10% स्पीड बढ़ गई, 15% फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो गया। और आप सोचिए एक इस चिड़िया की वजह से आज दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, नहीं तो बुलेट ट्रेन शायद दुनिया में नहीं चल पाती। और यही शिंकानसेन भारत में आ रही है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ये जो ट्रेन है अभी आपने देखा, ये दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है, जो 603 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जापान में चलती है। और आप सोचिए, हमेशा आप किंगफिशर चिड़िया के कभी भी उसके जो उसने काम किया है, जो इंस्पायर किया है रेलवे इंजीनियर्स को, कभी भूल नहीं सकते हैं। ये छोटी सी चिड़िया जिसका नाम ओवन बर्ड है, कैरेबियन में ये रहती है, जहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं और वहां पर टॉर्नेडोज वगैरह इस तरह की चीजें होती रहती हैं प्रकृति के खिलाफ। लेकिन ये चिड़िया जो घर बनाती है वो किसी भी साइक्लोन में बिल्कुल सुरक्षित रहता है, कभी भी डैमेज नहीं होता है। तो अब साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम ये डिजाइन कॉपी करके अपने यहाँ, जैसे कोस्टल आंध्रा है, उड़ीसा है, अंडमान निकोबार है, जहाँ पे साइक्लोन आते हैं बड़े बड़े, तो घर गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, कैन वी मेक सेफ हाउसेज? और उसके लिए ये मॉडल बनी है छोटी सी चिड़िया जिसका नाम है ओवन बर्ड। टाइम कम है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये लुफ्थांसा एयरलाइंस है। और आपने देखा होगा जाड़े में चिड़िया आती हैं साइबेरिया से 6000 किलोमीटर की यात्रा करके, वो फिर वापस चली जाती हैं जाड़े के बाद। कभी आपने किसी चिड़िया को इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पेट्रोल भराते देखा है? नहीं। संजीव कक्कड़ साहब बहुत बढ़िया भी कहानी सुना रहे थे, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन ऑयल सर, प्राउड ऑफ यू। लेकिन कभी आपने सोचा कि 6000 से लेके 12000 किलोमीटर की यात्रा एक चिड़िया विदाउट यूजिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एविएशन फ्यूल पेट्रोल करती है? तो आप देखिए इसके विंग्स, और यहाँ देखिए हवाई जहाज के आपके विंग्स। और ये यूरोपियन हनी बजर्ड है, इसने 42 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करी, और ये उड़ी केप टाउन से साउथ अफ्रीका और फिनलैंड पहुंचती है। इसमें पूरा ट्रैकिंग इसकी की गई, और इस पूरे रास्ते में एक बूंद पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यानी चिड़िया का ईंधन वही है जो वो खाना खाती है। नाउ साइंटिस्ट आर ट्राइंग, कैन दे डेवलप फ्यूचर एयरक्राफ्ट इंजन where aviation fuel will not be used, petrol will not be used, but it will be using what the bird eats as a food। तो आप सोचो कितना बड़ा एक रिमार्केबल चेंज आएगा। 10,000 किलोमीटर ये। और ये अंत में मेरे पास दूसरे लेक्चर के कॉल आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और अबिटी यूनिवर्सिटी में वो बार बार रिमाइंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सभी बड़े लोगों को, गर्ग साहब को, आशिमा मैम को, माथुर साहब को, जोशी जी को, सबको। और राकेश खत्री जी, आप बहुत नोबेल काम कर रहे हैं सर। मैं बहुत आगे बता सकता था, लेकिन मुझे तुरंत दूसरे प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। थैंक यू डॉक्टर शिखा त्रिपाठी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर कि चिड़िया भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। Madam, you are muted. Madam, you are muted. Yeah, thank you for reminding. What I was saying is that we all look forward to listening to and seeing our Scientology's presentation. I can see the smile on our friends, be it Vidyut or be it Manoj ji or be it Rajiv or Rajiv Agrawal and Anil ji, all of us. So thank you so much for sparing this much time. And now I would move on to our next man. The next man we all wanting to listen to. I would just share something about him. He's been working in the field of environment conservation for past 2 decades and firmly believes that artificial nests can aid birds in sustaining themselves in cities. Rakesh Khatriji, a green activist in Indian capital, has built more than 2,50,000 nets. Shikha, you have the wrong slide on the screen.
You're not able to see that? Professor Vikram Singh's. Hello. Yeah. Because all right. So I think what I'll do is maybe something, this virtual online thing technology I'm very weak at. So I'll directly connect to Khatriji, but then before that I just mentioned that he is known as Nest Man of India because he's built about more than 2 lakh, 2.5 lakh nests for the birds. और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है मैं नेचर से बात कर रही हूँ. तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जब वो हैं तो क्यों ना हम उन्हीं से सुने. मैं राकेश खत्री जी को इनवाइट करती हूँ. राकेश खत्री जी प्लीज आप आए और अपनी बातें. धन्यवाद आपका. और जितने भी गुरुजन बैठे हैं, मैं बिल्कुल भी अपने आप को एकेडमिक नहीं मानता कहीं से भी कि मैंने बहुत पढ़ाइयाँ करी हैं, और मैंने जो कुछ सीखा वो साधने से ही सीखा, जिंदगी में नेचर से जुड़ के ही सीखा. और शायद नेचर से मैं 7 साल की उम्र में ही जुड़ गया था. पुरानी दिल्ली में रहा करता था. हमारे घर की जो छत थी, घोंसले का मेरा शुरुआत वहीं से हुई थी. हमारे घर की छत पे बहुत सारे घोंसले हुआ करते थे, और वो घोंसले इतने कमाल थे कि हमारे घर में जो सामने दीवार थी उसमें खूब सारे होल बनाए हुए थे, उनमें चिड़िया खूब घर बनाती थी. और मेरा काम क्या होता था, स्कूल से आने के बाद अपना बैग एक तरफ फेंका और सीधा छत के ऊपर. मैंने बहुत सारे क्राइम के इक्विपमेंट अपने छुपा रखे थे. उसमें रंग था, कुछ रस्सी थी, कुछ दाने हुआ करते थे, और कलर हुआ करते थे खूब सारे कलर. कोई लिपस्टिक, सिंदूर या कोई भी कलर मिल जाता था उसको उठा के मैं ऊपर रख लिया करता था. टोकरी लगाता था, उसके नीचे दाने डालता था, रस्सी बांध के दूर बैठ जाता था. और चिड़िया जैसे ही दाना खाने आती थी, फट से उसकी रस्सी खींच दी, वो बंद, उसमें हाथ डाला, उसको पकड़ा. ये सबने अपनी जिंदगी में शरारत जरूर करी है. और खूब सारा रंग उसको मैं पकड़ के चिड़िया को इस तरीके से लगा के और फिर उड़ा दिया करता था. उड़ाता इसलिए था कि देखता था ये कब आएगी वापस. और जैसे ही उड़ा के जब वो वापस आ जाती थी और मैं नीचे आता था, तो मेरे मदर फादर पकड़ के मेरे कान मुझे उड़ाया करते थे थोड़ी देर तक. क्या आज तुमने फिर चिड़िया उड़ाई? मैंने कहा था मैंने उड़ाई. चलिए, वो खैर एक भाग्य की थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि फादर की जल्दी डेथ हो गई और हम लोग वहां से अशोक विहार चले गए. जब अशोक विहार गए तो एक बहुत बेचैनी मन में आ गई, क्योंकि वो कॉलोनी बन रही थी, अर्बन थी, और बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती चली जा रही थी, और पेड़ नहीं दिखते थे बिल्कुल, और घोंसला तो दिखता ही नहीं था. तो बड़ी बेचैनी होती थी. तो उसी जमाने में 1980s के अंदर हरा नारियल आना शुरू हो गया था साउथ से. लोग बहुत पिया करते थे शौक से और फेंक दिया करते थे कहीं पे भी. तो कई बार लगता था इससे कोई घटना होगी. तो हम 2-4 दोस्तों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, क्यों ना इन घोंसलों को इसको घोंसले के शेप दी जाए. तो हमने वो हरा नारियल लेके उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा करा, उसमें खूब सारे पुराने अखबार डाल दिए, उसके चारों तरफ रस्सी और कूलर की घास बांध के उसको पेड़ों पे लगा दिया. तो पहले अटेम्प्ट में हमने 40 घोंसले लगाए थे, और हमें लगा ये बहुत बड़ा काम हो गया, अब इसके बाद तो हमारा नाम हो जाएगा कि हमने घोंसले बनाए, चिड़िया आ गई. और लोग हंसते थे कि चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी, तो अपना घोंसला खुद बनाती है. और ये बात मैं आज तक सुनता हूँ, और मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, आपने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी? वो एक हाउस स्पैरो जो घर में रहने वाली चिड़िया थी, जो शायद आप लोगों ने सबने अपनी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस इसी पंखे के कप से किया होगा, जिसके अंदर चिड़िया अपना घर बनाती थी. और मेरे पुराने घर में जब घर बनाती थी तो मेरे दादाजी धारा 144 लगा दिया करते थे और कहते थे कोई पंखा नहीं चलाएगा जब तक चिड़िया इस घोंसले के अंदर है. अगर चिड़िया कट गई तुम्हारे कान काट दिए जाएंगे. और सच में शिखा जी, आज तक होता है कि जब मैं पंखे का स्विच दबाता हूँ तो मुझे उनकी आवाज कान में जरूर आती है कि कान काट दिए जाएंगे. मैं अपने बच्चों को यही सिखाता था कि देखो, पंखे में बनाएगी घर, उसके लिए कहीं एक रास्ता छोड़ो. और वैसे भी कहते हैं कि रिश्तों के अंदर एक ना एक रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि कभी खत्म ना हो. तो जब वो घोंसले लगा दिए और हम देखते रहे, 15 दिन हो गए, उसके अंदर कहीं चिड़िया ना दिखाई दे, तो बड़ी बेचैनी हुई. तो एक दिन नंबर डाले हुए थे तो हमने ढूंढना शुरू करा उसको. 38 नंबर तक बिल्कुल खाली थे. 39वें नंबर के अंदर 2 बुलबुल के छोटे से बच्चे थे, जिसने एक बहुत बड़ी आग दी. और ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इसी कहानी से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है. फिर अपना टाइम आ गया वहां से शिफ्ट करने का. फिर हम नोएडा आ गए. अब नोएडा आ गए तो तब तक शादी हो गई थी, बच्चे भी थे, काम भी करना था, रोजी रोटी भी चलानी थी, लेकिन घोंसला दिमाग से नहीं जाता था. तो उसी दौरान में मैंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन करा था एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए. उनके घर के ऊपर बच्चे आया करते थे. वहीं एक गड़ी मांडू जंगल था. ये 2 किस्से एक साथ हुए जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के और मुझे नेस्टमैन बना डाला. हमने बैम्बू स्टिक से इस तरीके से उसका स्केलेटन बना के बैम्बू स्टिक से घोंसले बनाने शुरू करे. ये बैम्बू के पतले पतले स्टिक्स, इनको गीला करके रख देते हैं हम लोग, और बाद में इसको हम जोड़ देते हैं. और इसके पीछे एक बहुत ही पवित्र मेरा एक कदम उठा
कि कुछ ऐसे टाइप की लड़कियां थी जिनको काम चाहिए था, तो मैंने उनका एक ग्रुप बनाया और ये सारा काम उनको सौंप दिया। तो इसकी जितनी इनकम आती है वो उन्हीं लोगों को जाती है और वही बनाती है और बहुत अच्छा काम करती है। महीने में करीबन 3 से 4 हजार घोंसलों का मटेरियल वो बना देती है। तो हमने बैम्बू स्टिक के बनाए और हमने उसके घोंसले वहां लगाने शुरू कर दिए। तो मैं रोज वहां से निकलता था, तो एक माली ने मुझे एक दिन टोका, जो बैठे रहते थे, बहुत बुजुर्ग थे। और ये शायद मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था और शायद खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा था जिसने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम इस रास्ते पे चलो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ। मैंने कहा जी। बोले बैठिए। क्या करते हैं ये? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। तो बोले इससे अच्छा काम कोई और हो नहीं सकता, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया, तो इस काम को तुम चालू रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत बरकतों के दरवाजे खोलेगा और तुम्हें कभी जिंदगी में किसी चीज की तकलीफ नहीं आएगी। ये 2008 की बात है, जनवरी की। उसी दौरान फिर मैं घर आ गया, उन्होंने मुझे कुछ दिया, मैंने बड़ी इज्जत की खातिर अपने हाथों में रखा, बाहर आके देखा तो वो 101 रुपए थे। तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर वही है जो मेरे पास आज तक मैंने संभाल के रखी है। उसके बाद मैंने उनको काफी टाइम ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। नेक्स्ट 27 फरवरी की बात है, बसंत पंचमी के बाद। तो हमने कुंडली के अंदर एक जगह है जो अनाज की मंडी है, वहां कुछ बैम्बू स्टिक के इस तरीके के घोंसले हम लोगों ने लगाए, जो मेरा पेटेंट घोंसला है ये बिल्कुल। तो हमने ये घोंसले लगाए और ये घोंसले लगाए और लगाने के बाद 20 घोंसले लेके गए थे, एक लगा दिया, 19 रख दिए। फिर वही कहानी शुरू हो गई, लोग निकलते हुए कहते थे और हम कैमरा लेके बैठे रहते थे कि इसमें चिड़िया आएगी। 26 मार्च को नहीं आई, 26 फरवरी को नहीं आई, 27 फरवरी को भी नहीं आई, 28 फरवरी लास्ट डे था, उस दिन भी नहीं आई। उसके बाद 1 तारीख को जब मैं जाने लगा, संडे का दिन था, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वहीं जा रहा हूँ। उसने कहा जाओ, होप लेके जाओ, आएगी चिड़िया। तो मैंने बोला अगर आज चिड़िया नहीं आई तो घोंसला लगाना बंद कर दो। मैं वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद जब मैं घर आ गया और फिर दोबारा कैमरा लेके गया तो 11:15 का टाइम था। मैंने लगाया और लगाने के बाद जब मैंने घोंसला लगा दिया तो देखा थोड़ी देर के बाद एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया। मेरी वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ है और मेल स्पैरो ने उसको पूरा मुआयना करा और वो उड़ गया। थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया और उसके मुंह में तिनके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर देख के आते हैं इसकी वेंटिलेशन कैसी है, इसकी सिक्योरिटी कैसी है। और उन्होंने वो तिनके उसमें रखे और मैंने खड़े होकर ताली बजाई। बहुत अजीब सा फिल्मी सीन लगा मुझे। जितने लोग निकल रहे थे वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी देखा और एक एक करके वो 19 के 19 घोंसले ले गए। और शिखा जी 3 दिन के बाद हर घोंसले के अंदर एक चिड़िया थी। वो सफर जो 20 घोंसलों से शुरू हुआ था, आज तकरीबन 3 लाख घोंसलों पर पहुंच गया है। और हम 2 किस्म के घोंसले बनाते हैं, एक तो ये बनाते हैं जो प्रॉपर जूट का बना हुआ है और बैम्बू स्टिक्स का 100% इको फ्रेंडली है। एक बहुत अच्छा घोंसला जो मैंने शुरू करा जब मैं कपिल के शो में गया था, तो ये बहुत पसंद आया लोगों को। उसके बाद मैंने इसकी तादाद बढ़ा दी। ये टेट्रा पैक से बना है। हम लोग टेट्रा पैक कलेक्ट करवाते हैं और टेट्रा पैक कंपनी के साथ फिर उसको प्रोसेस करके उसके इस तरीके से वुड के टुकड़े बनते हैं बड़े बड़े, उनको काट के बनाया जाता है। ये 70% पेपर से बना हुआ है, बहुत कूल रहता है, चिड़िया के लिए बहुत अच्छा रहता है और बड़ा मुफीद है। और उसके अंदर चिड़िया बड़े आराम से रह भी सकती है, बहुत स्पेस है देखिए उसके अंदर। ये 2 किस्म के घोंसले जो हम बनाते हैं, शायद कोई और नहीं बनाता होगा। ये भी जो घोंसला है इसकी भी एक बड़ी खासियत है, इसका होल जो आपको दिखाई दे रहा है और डंडी उसके बीच में आपको 4 उंगलियों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है पार्ट। तो ये इसलिए है कि अगर ये नीचे होगा तो क्रो या मैना कोई भी उसके बच्चों को निकाल के ले जाएगा या अंडों को नुकसान कर देगा। और चिड़िया जब एक बार पूरे 32 दिन का प्रोसेस लगा, मैंने देखा कि 12-13 दिन उनको घोंसला बनाने में लग जाते हैं। हम इसको बच्चों के साथ बनाते हैं, 20 से 25 मिनट में बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप उनको एक प्रोटेक्ट घर दे रहे हैं और बड़े आराम से अडॉप्ट करती है वो, नेचुरल है। चिड़िया जब अंदर चली जाती है तब तक मेल स्पैरो उसका ध्यान रखता है खाने का या सबका। जब एक बार अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो चिड़िया बाहर आ जाती है, फिर फाइनली वो इसी डंडी में बैठ के उन बच्चों को यहाँ से खाना खिलाती है। बहुत अच्छा मंजर होता है और ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे अवार्ड बहुत मिलते रहेंगे शायद खुदा ने चाहा तो, लेकिन मेरे पास उन अवार्डों के लिए बिल्कुल घर में जगह नहीं है। जो लोग मुझसे घोंसला सीखते हैं, बनाते हैं, ले जाते हैं, लगाते हैं, चिड़िया आ जाती है और वो फोटोग्राफ शेयर करते हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड वो है और इसीलिए मैंने बच्चों को चुना था। और सबसे अच्छा ये लगता है जब मैं वर्कशॉप करता हूँ तो 5 साल के बच्चों से उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स 3-3 जनरेशन बैठ के जब वो घोंसला बनाती है तो वो फैमिली घोंसला हो जाता है। बड़े मन से लगाते हैं, फिर फोटो भेजते हैं कि सर उसके अंदर चिड़िया आ गई, अब क्या करना है, अच्छा अब क्या करना है। और वो पेंडेमिक के टाइम में तो खैर कमाल ही हो गया क्योंकि हमारा सामान पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने प्लास्टिक के कंटेनर से घोंसले बनाए और 75,000 घोंसले उस दौरान में बनाए, जिनको हम काउंट नहीं करते कि चलो वो पेंडेमिक की भेंट चले गए। लेकिन जितने भी बच्चों ने बनाए, महाराष्ट्र, बैंगलोर, जोधपुर, कन्याकुमारी, सिक्किम तक,
सबने लगाए और सब अडॉप्ट हुए। तो मुझे लगता है कि मुझे तो शायद चिड़िया ने बहुत ब्लेसिंग दी, और मैं चाहता हूँ कि ये ब्लेसिंग मैं लोगों से बांटूं। सिर्फ इसीलिए मैं बच्चों के संग ज्यादा काम करता हूँ, और मुझे लगता है बच्चे अगर एक बार सीख गए और उन्होंने कर लिया तो बहुत कमाल है। और ये मैं उनको दो सीख हमेशा देता हूँ कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को अपने पापा और मम्मी के एटीएम कार्ड की तरह यूज करो, उतना ही निकालो जितना चाहिए, बेजरूरत के मत निकालिए, और पानी हमेशा बचाइए आप। तो बच्चों को मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक सीख जरूर दीजिए। जब घर में आपके रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चों को प्रमोट करिए कि वो पानी दें उनको, भले ही वो एक जग और 6 खाली गिलास रख के ले जाए, क्योंकि हर आदमी तो पानी पीता नहीं है। कुछ ने पिया, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने आधा पिया, आप पानी को उठा के सिंक में डाल देते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप एक जग रखें साफ, कुछ गिलास रखें, जिसको पीना है वो पिएगा, तो पानी बचेगा ही, वो वेस्ट नहीं जाएगा। यही मेरी सीख है, यही मैं बच्चों को सिखाता हूँ। दिन में करीबन 400-500 बच्चों के संग रोज इंटरेक्ट करता हूँ, और वो शक्ति देते हैं। इसीलिए मैं 61 साल की उम्र में बिना ब्लड प्रेशर और बिना शुगर के खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है नेचर से अच्छा साधिन्य आपको कोई नहीं दे सकता। वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। बच्चों को मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो आज तक मानते हैं, उस चीज को करते हैं कि आप बसंत पंचमी खत्म होने के बाद जब उनके घोंसला बनाने का टाइम आता है, आप अपनी छतों पे, पार्कों में कहीं पुरानी ट्विक्स तोड़ के डाल दें, पुराना ऊन डाल दें, धागे डाल दें, रुई डाल दें, वो उनके घोंसलों में काम आती है। क्योंकि प्रकृति देखिए कितनी सेवा करती है उनकी। नीम की पत्तियां झड़ती हैं, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, डंडी रह जाती है। 65% बर्ड उन्हीं डंडियों से अपना घर बनाते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेस नहीं लगता। तो जब नेचर हमारी मदद कर रही है और नेचर हमें खुल के दे रही है, तो हमारा एक फर्ज तो लाइफ में बनता है कि नेचर के संग कहीं सपोर्ट करें। जी राकेश जी, जब आप बोल रहे थे तो मुझे ये देख के सबकी जो मुस्कुराहट, ये खुशी हो रही थी जब आप मुझसे फोन पे बात करते थे, और जो मेरी मुस्कुराहट होती थी कि जैसे मैं सीधे प्रकृति से बात कर रही हूँ, वो ही मुस्कुराहट मैं सभी के चेहरे पे इस वक्त, जो हमारे ऑडियंस हमारे से जुड़े हुए उनके चेहरों पे देख रही है। धन्यवाद। मैं देख वक्ता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं कहानी सुना लेता हूँ। बस मैं अपने आप को स्टोरी टेलर ही बोलता हूँ। इसलिए जब मुझे आप लगता है बच्चों को आप कहानी सुनाएं तो वो ज्यादा इंप्रेस होते हैं और ज्यादा अच्छा काम करते हैं। और मैं राकेश जी, बहुत लकी हूँ कि कल मैं एक स्कूल के अंदर वर्कशॉप करने गया था। वहाँ एक 3-4 साल की लड़की, 5 साल की लड़की थी शायद। उसने मेरी एक साल पहले वर्कशॉप अपनी मम्मी के संग अटेंड करी थी। उसने घर जाते ही सबसे पहले बताया और अपनी मम्मी को कहा कि वो फोटोग्राफ शेयर करो। तो मैंने उनको एक फोटोग्राफ और दी। मैंने 2008 में एक छोटी बच्ची के साथ घोंसला बनाया था। अब वो इंडिगो में एयर होस्टेस है, अभी लास्ट फ्लाइट के अंदर वो मुझे मिली, और उसने वो फोटोग्राफ दिखाई कि देखिए मैंने आपसे 2008 के अंदर ये घोंसला सीखा था। तो मेरी जिंदगी में ये इंसिडेंट बहुत है। मुझे खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे बहुत मिलते हैं। जैसे आपसे मुलाकात हुई तो मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा ये वाला काम भी करती हैं। अब आपने कहा करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल सर्च करूंगा मैं। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे इंडियन ऑयल वालों की बात सुन के, सर की, कक्कड़ साहब की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं वो। डॉक्टर साहब जो शायद वीके सिंह जी थे, उन्होंने जो बोला वो भी बहुत अच्छा लगा, और अभी बाकी लोगों को भी सुनेंगे। मुझे लगता है सुनाने से शायद लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक छोटी सी पैठ बन जाती है और वो उस रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। और मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि राकेश जी के पास अवार्ड्स, जो जितने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, वो सब उनको नवाजे गए। चाहे वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, जो 2 बार उनको नवाजा गया है, प्लस ग्रीन एप्पल इंटरनेशनल अवार्ड जो उनको दिया गया है। पर जैसा वो कह रहे हैं, ये अवार्ड अपने आप को धन्य समझते हैं जब शख्सियत जैसे उनकी उनको दिए जाते हैं। तो जैसे जब वो बात करें तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं राकेश जी आपको, और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों के अरमान है कि आपको जल्दी हम अपने शहर में देखें, बच्चों के पक्का, साथ देखें, बिल्कुल और हम बिल्कुल। सब, चाहे जितनी उम्र के हो गए हो, हम सब जुड़ेंगे घोंसले बनाने में आपके साथ, और आपकी बातें सुनने। अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। किसी को घर देना शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग जिंदगी में आदमी को जरूर लेनी चाहिए, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। मैं जैसे ये किसी ने कहा है कि किसी मतलब जो आजकल माता पिता का दर्द होता है कि उम्र बिता दी हमने बच्चों की फिक्र करने में, और बच्चे अब व्यस्त हैं हमारी कमियों का अपना जिक्र करने में। तो कहाँ तो बिल्कुल। बच्चे अपने माता पिता को ही एक घर नहीं दे पाते, घर से उनके घर से बेदखल करते हैं, और आप चिड़ियों को उनका घर घर दे रहे हैं, उनका घोंसला दे रहे हैं। तो बहुत बहुत
धन्यवाद। और आपकी विनम्रता है कि आप एक बिना किसी हमें कोई कभी 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा। आप तुरंत जुड़ते हैं फोन से और हमारे साथ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आपके घोषणों के अपने म्यार में रख रहे हैं और सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ सबको। तो आपको बिल्कुल धन्यवाद। बनाइए, और मैं आपको कुछ फिल्में शेयर कर दूंगा जिसमें घर के मटेरियल से घोंसला बनाने की बहुत आसान तरीके हैं। वो घर में बना जी, सकते जी। हैं 20 मिनट के अंदर, और मुश्किल से 30 रुपए लगेंगे उनके। लेकिन आप सोचिए 3 जनरेशन को आप घर देंगे तो कितनी अच्छी बात है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह से कुछ कोशिश करेंगे। मैं अपने भी यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मैं आपको अपने साथ शहर में बुलाऊं और हम बिल्कुल, सब मिलकर के जब आपके आप साथ चाहें, जब आप चाहें, जब आप चाहें, जी घोंसला बनाना सीखें। तो जब आप चाहें। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी की तरफ से आपको मैं अब मूव करती हूँ। हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मैडम आशिमा सिंह। क्योंकि मैं अभी उनके बारे में वैसे वर्बली बताऊंगी, क्योंकि पीपीटी का मैं इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहती। और आशिमा मैडम, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, वो मेरी आदर्श हैं और इस इवेंट की मेंटोर हैं, नर्चरिंग करने वाली हैं, अभिभावक की तरह वो उसके साथ चलती हैं, ग्रूम करती हैं। और वो एक सिविल सर्वेंट रही हैं, IRTS ऑफिसर रही हैं। उनके जो उन्होंने काफी कई मय पदों पर अपना कार्यभार संभाला है। वो DM भी DRM रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व में। एक जो रेलवे ऑफिसर्स का संस्थान है लखनऊ में, इरिटिम, वहां पे वो डायरेक्टर रह चुकी हैं। और इन पदों के साथ साथ जो उनके व्यक्तित्व है, वो उनके पदों के को गरिमामय ही नहीं बनाता है, बल्कि एक तरह की शाश्वतता लाता है। उनके साथ बात करने में आपको एक तरह के अनुभव इस प्रकार का होता है जैसे कि आप वास्तव में प्रकृति की शाश्वतता से जुड़ रहे हैं। तो मैं मैडम को पूरे नमन के साथ, प्रणाम के साथ आमंत्रण करती हूँ। मैडम अपने थॉट शेयर करें, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। प्रणाम। मेरे से बुजुर्ग तो यहाँ कम ही लोग होंगे, क्योंकि मेरे बाल आप देख ही रहे हैं, काफी सफेद हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चे ही होंगे। तो बच्चों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में हमें भूटान जाने का मौका मिला। भूटान जाने से पहले हम लोगों ने भूटान के बारे में पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि हैप्पीनेस इंडेक्स दुनिया में हाईएस्ट इस समय कहाँ है? भूटान। और हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ साथ दूसरी भूटान की क्या खासियत थी कि प्रकृति से जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ राष्ट्र है वो है भूटान। हाँ, फाइनेंशियली बहुत वायबल नहीं है, बहुत रईस नहीं है, वहां बड़े बड़े थिएटर्स नहीं है, बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे हिंदुस्तान की भी जितनी कार्बन है वो सब भूटान एक बाउल है जिसके अंदर जाके खप जाती है। तो हम यही देखते हैं कि प्रकृति के साथ जो आपका तालमेल है, वह आपकी मानव की खुशी से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप उसकी है। सो ये हमें समझना आज के युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि तो मैं एक लाइन बहुत हमेशा कोट करती हूँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, कि इट इज ट्रूइज्म टू से दैट मैनकाइंड इज इन द मिड्स ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्राइसिस इन हिस्ट्री. Our predicament is due to the lack of adjustment of human spirits to the startling developments of science and technology. The great scientific advancements have relieved us of grinding poverty, mitigated the tortures of physical pain, yet we suffer from a kind of neurosis, from an inward loneliness. तो आखिर इतनी ज्यादा प्रगति के बाद भी हम दुखी क्यों हैं? हम अपने को अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? जब आप एक बार इन बातों का अंतरावलोकन करेंगे तो आप यही देखेंगे कि पिछले 100-200 वर्षों में हम लोगों ने प्रकृति का जितना नुकसान किया है वह संपूर्ण मानव इतिहास में वैसा कभी नहीं हुआ है।
तो जब तक हम वापस प्रकृति की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम इस समय एक वोल्केनो के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी हवा पोल्यूट होती जा रही है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता जा रहा है। तो हम अपनी को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में, अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में दिन प्रतिदिन अपनी एक जो शांति है और अपनी एक जो प्रगति है और जो एक अपना आत्मिक संतुलन है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा सुना IOCL का कि वो लोग ऐसी एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले हमारे जमाने में जेट्रोपा बहुत पॉपुलर हुआ था कि बायोडीजल, लेकिन मतलब तरस आता है आज यह देख के कि हम अपने बच्चे को अगर साइकिल से स्कूल भेजना चाहें तो हम नहीं भेज सकते, क्योंकि स्कूलों के आगे इतनी गाड़ियां, लंबी लंबी मर्सिडीज और BMWs खड़ी रहेंगी और सब में एक एक बच्चा। तो ये सब चीजें हमें अपनी खत्म करनी होंगी। जब तक हम अपने को प्रकृति के पास नहीं लाएंगे, अपनी ये जो ओवर लग्जूरियस लाइफ है इससे दूर नहीं जाएंगे, तब तक हम प्रसन्न नहीं हो सकते। हर एक घरों में 4-4 गाड़ियां, पार्किंग की जगह नहीं है, सड़क के ऊपर गाड़ियां भरी हुई हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक विराम लगाना आज के युग में आवश्यक है। हम एनवायरनमेंट को सिर्फ जोड़ते हैं कि भाई पॉलिथीन मत यूज करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो, इन्हीं 2-3 चीजों के अराउंड घूमते हैं। लेकिन जिस कदर एसीज चल रहे हैं, जिस कदर गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस कदर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है और हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, हमें उस लाइफस्टाइल को चेंज करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब अगर हम अपने पुराने जमाने में चले जाएं तो हमारे वेद तो शुरू ही नेचर वर्शिप से होते हैं, सब में केवल नेचर वर्शिप है। और आप देखिए कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वह भी हमें सिखाते हैं कि भाई दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन कैकेयी ने रोक दिया कि पहले इन्हें वातावरण को समझ लेने दो, इसलिए 14 साल इनको वन में भेजो। जब ये वन जीवन को समझेंगे तभी ये आकर राज्य संभालने योग्य होंगे। तो जो अब छेपक के रूप में उसको हमने कह दिया कि कैकेयी ने उनको वनवास दे दिया, लेकिन वास्तविकता यही थी कि वो वन जीवन को समझने के लिए उन्हें पहले भेजा गया, वातावरण और प्रकृति को समझने के लिए उनको भेजा गया था। और इसीलिए सीता ने भी मना कर दिया कि लव कुश को मैं महल के अंदर जन्म नहीं दूंगी, मैं प्रकृति के बीच में ही इनको पालूंगी, जिससे कि एक प्रकृति से इनका तादात्म्य बना रहे। वही हम महाभारत में देखते हैं कि लाक्षागृह के बाद पांडव जो थे वो वन में चले गए, वो वन में रहे, उसके बाद फिर अज्ञातवास के दौरान फिर उनको वन में भेज दिया गया। तो एक बड़े से बड़ा राजा बनने के पूर्व उसको प्रकृति को समझना बहुत जरूरी होता था। तो आज के जमाने में भी जब तक हम प्रकृति को समझेंगे नहीं, अपना ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल कम नहीं करेंगे, अपने घरों में एसी चलाना कम नहीं करेंगे। आज मतलब जो है ना, अच्छे स्कूल, लोग कहते हैं कि कौन सा अच्छा स्कूल है जी, वहां क्लासरूम्स भी एयर कंडीशन है। अरे बच्चे अगर बचपन से एयर कंडीशन क्लासरूम्स में बैठने के आदी हो गए तो वो बाहर काम कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी और हमें वापस लौटना होगा। चिड़िया के घोंसले बनाने की आवश्यकता हमें क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उनके घोंसले खत्म कर दिए हैं। अरे चिड़िया का काम नहीं कर सकती, हमें उसको घोंसला, अरे चिड़िया तो हमें घर देती थी, हमने आज उसको इतना बेचारी बना दिया है कि वो खुद घर से बेघर हो गई है। भाई बया का घोंसला देख के ही तो हमने घर बनाना सीखा। तो हमें वापस अगर
जीवित रहना है और इस प्रकृति को बढ़ाना है, तो हमें वापस प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा और अपना जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें कुछ न कुछ बदलाव अवश्य करना होगा। मैं आज भी जैसे याद करती हूँ कि भाई महात्मा गांधी थे, उनको क्या कहा जाता था, सारे संबल के 3 खंड 2 वसन, एक सूखी लकड़ी, सारी सेनाओं का प्रतीक, पीछे चल आती बकरी। तो और आज दूध भी हम कैसे लेते हैं, पॉलिथीन बैग्स के अंदर लेते हैं। आखिर क्यों? शहरों में गाय रखनी बंद हो गई है। अरे ऐसा शहर कहाँ क्या जिसमें आप गाय नहीं रख सकते? अगर गाय रहती है तो वो बाहर प्लास्टिक चलती है। तो हमने पूरा का पूरा जो हमारे लिए आवश्यक है वो अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज लाना जरूरी है कि हम प्रकृति के पास रह सकें और प्रकृति को समझ सकें, उससे एक तरह का तादात्म्य स्थापित कर सकें। तभी संभव है कि हम लोग तो अब 70-70s में चल रहे हैं भाई, आगे 10 ज्यादा से ज्यादा 10 साल और है, कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वह उसका भविष्य हम खुद समाप्त कर रहे हैं। प्रदीप जी का एक सैंटून यही मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि कौआ ने पहले तो पत्थर डाले तो पानी ऊंचा हो गया, वो आईआईटी का इंजीनियर आया तो उसने उसमें पंप लगा दिया, लेकिन उसके बाद जो वेल ट्रेन्ड इंटरनेशनल लेवल के जो साइंटिस्ट आए वो पंप या कुछ भी लगा के पानी वापस नहीं पा पाई। तो इसलिए स्वयं सिद्धा का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है कि कम से कम बच्चों को जोड़ा है, और शिखा और उसके साथ के सदस्यों ने ये बड़ी मेहनत की है कि बच्चों को इस पूरी की पूरी जो एक हमारी सोच है उसका भाग बनाया है, जिससे ये अवेयरनेस पैदा हो कि हाँ प्रकृति की आवश्यकता क्यों है। ये है कि ये आज हमारे लिए आवश्यक नहीं, इट इज बिकम अ नेसेसिटी। अगर हमें आगे की जनरेशंस को जीवित रखना है, आगे ह्यूमन लाइफ को इस प्लैनेट के ऊपर रखना है, तो हमें प्रकृति के बारे में सोचना होगा और वापस प्रकृति में जाना होगा। ये मल्टी स्टोरीड और ये जो एक्स्ट्रा व्हीकल्स और एक्स्ट्रा जो एयर कंडीशनिंग एंड एक्स्ट्रा लाइटिंग, इससे हमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ दूर जाना होगा। तभी यह संभव है कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैनकाइंड, ये ह्यूमैनिटी एट लार्ज का सोच सकते। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। एज यूजुअल आप स्पॉन्टेनियस होती हैं और इतना ज्यादा वी आर engrossed. I can see everybody, we get connected to you so strongly because you talk something which happens in our life, which we live every day, and many times we miss it and we know that we're missing it, but still we're not able to do anything. पर आपने जो practical चीजें बताई हैं, that's something very important. आप इस मेंटोर रही हैं, नर्चर करती रही हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से हम तक पहुंच पाती हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं मूव करती हूँ हमारे जो इस इवेंट के अत्यंत प्रेरक पर्सनालिटी हैं, और वो भी उन्हीं पर्सनालिटीज में से एक है जिनके बिना शायद मैं सोच नहीं सकती कि उनके बिजनेस के बिना मैं ये इवेंट कभी कर पाऊंगी। हमारे मेंटोर गुरु श्री विद्यानंद गर्ग जी, श्री वीएन गर्ग जी, थोड़ा हम सभी उनके बारे में जानते हैं, तो उनका ऐसे परिचय सभी को पता है। न ही केवल एक 1980 बैच के बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर के रूप में, बल्कि एक शख्सियत के रूप में कि जब उन्होंने जो भी पदभार संभाला है उस पद को गरिमा मिली है। यही कारण है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी शायद उनका एक उदाहरण दिया जाता है हर जगह कि यदि कोई ऐसा हो जो कि प्रशासनिक सेवा में हो तो उनके जैसा हो। वीएन गर्ग सर ने अपनी पढ़ाई की है जिसमें वो फिजिक्स में उनको ऑनर प्राप्त है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार शासन में कई पदों पर विद्यमान रहे हैं। वो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए हैं। फर्स्ट टाइम उनका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डिपार्टमेंट का नाम आया था बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट ही मेड बाय प्लांटिंग
10 million sapling in a day in 2007 is not an ordinary thing when he started. Now many people are doing, but he was the one who began this. So sir is there, and I request, sir, I would like sir, to address all of us as we are longing to hear him. Sir, please. Thank you, Dr. Shikha Tripathi. I have been associated with the Swayam Siddha and this environmental event right since the beginning, that is 2008. And I have found that this organization, and particularly Dr. Shikha Tripathi, has set standards which others should emulate. And for the last 3 or 4 years, I have been watching Indian Oil Corporation's active cooperation in this regard, and I congratulate IOCL and its senior officials who are responsible for this kind of collaboration, because this not only gives encouragement to the people who organize such events, but also spreads the word around about environmental sustainability and such related things. Now, only one earth. We have only one earth. What does it mean? It means there is only one planet in the universe which has life on it. Life in various forms, flora, fauna, animals, insects, and of course, human beings. Now, this earth is only one. There are billions of galaxies in the universe, as astronomy and physics tell us. There are billions of planets in this, our own galaxy, but the only planet which has life so far discovered is Earth. Now somebody said, and I was trying to trace who said it first, that we do not inherit this earth from our ancestors. We borrow it from our future generations. हमें ये अर्थ अपने बच्चों के लिए एक लोन के रूप में रखनी है और उसे चुकाना है by restoring it or making it better with interest, not with penalties and defaults, but with interest. And therefore, we must keep it in mind that when we talk about this only earth, we talk about our future generations. Will they be able to live? Now, you must have heard somebody called Elon Musk. Elon Musk, who started PayPal in US and became multi-billionaire. Then he started a SpaceX organization. And you know what is his objective? Objective of SpaceX. It is to colonize the planet Mars in such a way that when life is impossible on Earth, people can move on to the colonies that he proposes through SpaceX to make in Mars. Now, this is not some kind of story. It's not fiction. It's not a novel. Elon Musk is very much there. He is investing thousands of crores in this Mars project. And he says, he is on record, and I've seen his statements, that this earth will not be able to survive for the next few decades, maybe 5 decades. After 5 decades, earth may not survive, which means life on earth will become impossible if we do not meet this triple emergency which is already facing us. Now, triple emergency does not include corona, which was a medical emergency. Triple emergency is
climate crisis, global warming, the temperatures rising and rising in such a speed that ultimately it will be difficult to live with such a high temperature. And then loss of biodiversity. We as human beings think that, this whole thing has been created only for us. I mean, unfortunately, I don't know. God has given us so many qualities, but one thing which it has side by side given us is some kind of selfish nature. And that anthropomorphic view of the world, that this world is for us, not for tigers, not for animals, not for other species, only for us. And as a result, we have adopted a lifestyle, we have adopted a kind of a model of progress where biodiversity is fast disappearing. There is a loss. 1 million species are already under extinction. 1 million. After all, there must have been some purpose of eco-balance or whatever in creating those kind of biodiverse forms. All those species are dying or disappearing because of our lifestyle. And thirdly, pollution. Look at air pollution. You know how many people are dying premature because of air pollution? It is 7 million. 7 million people in the world are dying every year because of air pollution. So this is a triple emergency. And this triple emergency, according to Elon Musk, will be responsible for highly possible extinction of human race from this earth, and therefore he is building a colony on Mars so that we can go and stay there. Those, of course, who will be able to afford at that time, if at all that time comes. Let us hope Elon Musk is proved wrong. But how? Elon Musk cannot be proved wrong only by wishing it. We as human beings, as Ashimaji just now said in a very beautiful way, we have to change our lifestyle. We have to change the progress model that we have adopted. We have to ensure that we use transport in a manner which is conducive to low level of carbon footprint, and so on and so forth. I mean, I will not be going into all those details of what should we do. I mean, that's a separate topic of changing our lifestyle. You all are well aware, anybody who starts on sustainable living studies immediately knows what needs to be done. But whether we actually do it, to what extent we can do it, of course, it is not only for the individuals, it is for the governments, it is for the local bodies, it is for the municipalities, it is for the banks, it is for the industry and commerce, business, it is for the educational institutions. All these sevenfold actors, they have to come together to ensure that we have this sustainable living, and therefore we prevent these medical emergencies. So my purpose here is just to sensitize the students who will be among the audience that we have only one earth, and we have to not only think but also act and also create pressure on all those concerned who are responsible for making policies and other things, so that we have this planet for us for all times to come. I once again congratulate Dr. Shikha Tripathi, Indian Oil Corporation, and all others who have made this event possible. And thank you for giving me time to
share a few words with you. Thank you. Thank you, sir. You have been always bringing new things to us, new information to us, something which we had not known before. The way you expressed it and the way the facts you brought to us every year, that's what has happened. All of us, be it us or the youngsters who have been connected with this event, we get benefited immensely by the facts that you bring connected to the environment. It's something very new to us. And this year again, we have learned so much from you. I had read about Elon Musk going to Mars. I mean, going to Mars means working on, making a colony on Mars. But I didn't know the background, the way, the fact that you brought to us. And there's something very, very, the thought itself is very scary. Not about Elon Musk, but about that incident when we are not able to live on Earth just simply because of the pollution or the damages that we have caused to it. Thank you so much, sir, for sensitizing us the way you always do. Thanks a lot, sir. So with this, we move on to the Children Forum. Now, what exactly is Children Forum is? And I remember again, Shubham is there. It's late night out there in Canada. Shubham with Anil ji is awake. And when I see him now again, I'm nostalgic, connecting to the 2008, 2009, 2010, all these years, and this little one has been with me. And we started this contest, we introduced thanks to V.K. Joshi sir, who gave this idea to us to introduce youngsters or children in our event. Earlier, we were only having speakers. So in 2010 onwards, we introduced, environmental contests for kids. And his idea was that if you involve children, probably they will be the carrier for future, messages for future to build a good environment climate or to sustain the climate or to make Earth, which is only Earth, to worth living at. So he had introduced. So since then, we've been every year organizing contests for kids. The last 3 years, because of the virtual event, we are able to reach out to the entire country. And this year, again, the contest was on creative ideas. So there was a Google link created through Google form. We sent this link to the children. So 4 states and 206 children, they were there for this contest. And they sent their entries. There were 8 schools who were the part of it. And we have got the results. Then the expert jury who had assessed, and then there are a list of, all of them are winners though, but the first 5 or 6 have been, those one who are position holders in this winner. The most important thing is which all kids and all of us long for is this trophy. This is prestigious Dr. Veerbhadra Mishra trophy, which goes to the best school, the child who scores the highest. So before I announce the positions, I would just invite Augustine, if he's around, because he's been one of the main jury members, to mention as to how did they go about it. Is he there around? Augustine, are you there? Because he was traveling, so that's why I'm just asking. Or the other jury member was Venkatesh. The Venkatesh has been a professor. He's an environmentalist of international repute. He was also one of the jury members. He had his children's exams. Children means his students' exams going on. So, but then I'll check whether he's around, if he's there. In case if he's not there, then I would request Ashma ma'am. Ma'am, are you there? Anyways, because all these members have been there since the beginning. Ma'am, are you there? Yeah, I'm very. Ma'am, just few words, because all children would be wanting to hear as to what has been the experience of, because all jury members were connected to each other. What has been the experience of jury members on assessing the? Very, very, very inspiring, because we got almost about 70 entries.
And out of those 70 entries, we were supposed to choose the best entry. And the topic which was given was very like you to just explain the topic and how you came to choose this as a topic. If you could throw some light on that, that would be very interesting. Ma'am, I was just thinking that we should give a creative question to them so that, you know, they don't give us those very conditioned response. Though I have, my mind doesn't think any more creative ideas, but nevertheless, I just thought, why not give them if they become the minister of their area, so what will they do? Because politics is very much active these days in the minds of children. So I thought, why not connect this way? So that's the question that I gave to them. That if you become the minister of your local area, what is the local problem of environment you'll solve and how? So that's what it was, ma'am. So it was very interesting because otherwise people generally criticize the government more without giving the solution. But everybody loves to be critical of the government, critical of the elders, like juniors want to be critical of the elders, critical of the others. But once you are given the responsibility of doing it yourself, then comes the actual challenge. So the challenge was quite interesting, and the students did come out with very, very practical, very, very good solutions. Like I was quite surprised to see how systematic they were, as if they have been working in the government earlier and as if they've been handling such projects. And it was an experience for all of us to get those clear-cut responses from the students. And students like young boys and girls in their early teens, and they are coming out that these are the do's which we will do, and these are the don'ts which we will do. They came out with all key, we have to recycle, we have to reuse, we have to reduce, and then how to do plantation and water. They were quite clear, okay, if somebody throws filth somewhere, he should be caught, how he should be penalized. So very innovative and creative ideas. And then about sound pollution, that how much honking should be permitted, and if somebody honks beyond this limit, he is polluting the sound, so what penalty should be laid for that. So they were very, very creative. That in the cafe, mode where the students were supposed to out cartoons. In that, they had said that the masjids and the mandirs, these should be made soundproof so that the sound doesn't come out. So such ideas were lovely, and lovely hearing it from the younger generation. That gave a positive vibe to people like us, that the earth after us is going in safe hands, because the only assurance which we want today, that when you pass, after our passing, what will happen? So when you hear the youngsters and their sensitivity, these things, you gives you a lot of pleasure. Yes, they're thinking in the right direction, they are moving in the right direction, and we are sure that the earth 10 years, we are not going to become what Elon Musk has predicted, but tomorrow's earth will be definitely better than today's earth. The maximum harm has been done by our generation, because generally these days also, whenever we are traveling, and if anybody throws a plastic on the road after opening, it's the my youngest don't throw garbage on the road. So such sort of a sensitivity, if it is developing, it is a very, very good and positive
sign. And Shikha, I for myself was very happy after reading these the comments of this 70 odd contestants which you had sent to us, and I'm sure the other jury members were equally happy, and they would have loved to share their experience with the others as well. But unfortunately, everybody, Venkatesh and Augustine were a little busy, and I suppose Mr. James is not keeping well. So, yeah, I'm online, and this is Augustine. Hi, Augustine. I know you're traveling and you must be checking in. No, I'm online. I can speak for a few minutes. Yeah, please, can you now? Going through this jury, like, let me say, it was like meeting 20 environment ministers of India. So just like, Florence Nightingale said, 90% of the nurses are under 11 years old. I think our best ministers are just about 15 years old. And they have great ideas. They have, more bigger than Elon Musk ideas, like Gadsab was saying. Like one of the kids what he wants to do is to saturate our country with computerized garbage bins, and anyone who puts into garbage into it gets a code and gets a financial reward. And it would operate like Manrega. If you don't have money to eat, if you don't have food to eat, you pick up the garbage and put it into that box, and it is computer coded, so you will get your money. I think this is a brilliant idea. It needs to be developed. It needs to go further. And then there is this one kid who said he'll saturate the country with public transport. Now, this is something that every socialist leader has promised us, but when they become ministers, they forget about it. It was a very pet idea of George Fernandez that we will not have cars to be produced. We'll have only public transport. But he didn't follow that up when he became a minister or when he became influential. But I think the children have their heart in the right place. Then there is another child who says, it should be waves of campaigns. It's not one day, we celebrate a day and forget it. It's the regular campaigns. Then there is another child, and that is, I think it's a most brilliant idea. What he's saying is, you don't have one ecology treatment for the entire country. Divide the country into ecological zones and have tailor-made ecology plans for each area. Now, I think this is, this is highly practical, but a highly participative idea. So, I've just met my 20 environment ministers of India, and I'm happy. Thank you very much. Thanks, Augustine. And ma'am, I know, Augustine, you're traveling, still you could spare, because that was very important for all the kids to know and all the audience to know as to what are those creative responses which have come. What we did was that among the jury members, we divided the entries and they sent to them. And then these were the shortlisted candidates, which ma'am talked about. So thank you so much. Now, this is the time now when all the kids are waiting to announce there are 7 schools right now participating here in this event. 8th school could not participate because of the problems there. That is from Andhra Pradesh. I'm going to announce the winners. So everybody's winner, but the position holders. So I begin with 2 juries special mention positions, or rather awards. So the first one among the juries, a special mention goes to Himachal Pradesh National Institute of Open School, which is Ghamleshwari. Ghamleshwar is here. If you hear and wave us, yeah, she is here. She is from Open School, National Open School from Himachal Pradesh. So you got this special jury's mention prize. Then the other one is from CMS Mahanagar, Shaurya Saxena. Is CMS Mahanagar there? In case you are there, you can raise, and I can see audience clapping because they muted themselves so that the chaos is not there, but then they're clapping. Now move on to the third position.
The third position goes, it's shared by two schools, CMS Aliganj and CMS Indiranagar. From CMS Aliganj, Gaurangi Pathak, and from CMS Indiranagar, Arijit Roghar. These two are sharing. So Kailash Keswani ji is there from CMS Aliganj. I congratulate you. Shalini is there with her children from CMS Indiranagar. I congratulate, these are the teachers who have mentored their kids for the contest. Now the second position, Shalini is here. Shalini, congratulations. Yes, ma'am. Can you please repeat again, ma'am? I was not able to hear the name actually, the name of the child. I'll do that, Shalini. Just mute yourself. I'll do that. This is the third position, which has gone to Arijit Raghav from CMS. Yeah. Okay, and thank you so much. Yeah. You can mute yourself now. And congratulations, CMS Aliganj, Gaurangi Pathak. Kailash ji is here. Kailash ji, congratulations. Kailash ji, I special mention to you, been since 2010, you have been with us, and you have been also one of those very important founders of this event. Thank you so much. So, and then now move on to the second position. Now, second position is also shared by two institutions. One is Pioneer Montessori School, El Deco, and Maulana Azad College, Aurangabad, Maharashtra. So from Pioneer Montessori School, Saksham Gupta has scored for second position, and from Maulana Azad, Aurangabad, Maharashtra, Zara Fatima, she gets the second position. So congratulations to both. I can see Sharma is smiling for her school. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah, and then Zara is there. Zara Aslam is there. So Aslam is a guardian. Congratulations, Aslam, for Zara. And this was the second position. Now everybody is breathlessly waiting for the prestigious the Dr. Veerbhad Mishra trophy, which will go to this year to CMS Rajajipuram. Hiba Fatima. Is there anybody from CMS Rajajipuram here joining us? Is there anybody? All right. Because schools have their constraints, they have classes going on many times, so they had joined, but they might have logged out. So Hiba or CMS Rajajipuram takes away the trophy this year. I'm sure the next year some other school would surely take. You all are. It's not a first, second, third position. It is all who have attempted and given the brilliant ideas have been winners. So with this, I just asked because as I had promised that if Shobhit is there, then if Shobhit around, he is doing a great event on mental health on 1st October. So maybe if he gets me, then I'll share with all of you subsequently. He's not around. Now with this, before I announce the conclusion of this event, you know that this is not something which is formal. You know that all of you are not formally connected. All of you connected with your intrinsic mandate is spirituality. Yet, here. When I express my gratitude to each one of you, it doesn't come as a formality. It comes as something which I'm full of it. So I begin with expressing my great gratitude to Dr. Vikram Singh, V.N. Garg sir. And when I say my gratitude, actually I can't thank them enough in this life. I need many lives to say that. To Ashima Singh, madam. A special thanks to IOCL. I mean, there are many agencies who get connected as partners, but this agency is something which has the same mandate, which is actually, which any spiritual organization has. When I talk about spiritual, it has nothing to do with A or Y religion. It has everything to do with the true truth and the values.
So I'm grateful to them. I'm grateful to Sir Shri Sajeev Kakkarji to spare that moment or time to address us and share about IOCL. All the team members who've been with us, and very smooth way that I can connect to them and they connect to me. I'm grateful to them, each one of them, be it Anirudhji or Anegiji or the entire team. I am grateful to, again, I can't thank Madam Ashma enough because she's a part of it. I can't think, having an event without her, Vikram Singh sir or VN Garg sir, VK Joshi sir, YD माथुर सर, मैं इन सभी को पूरे नमन के साथ उनका मेंशन कर रही हूँ, उनको ग्रैटिट्यूड अर्पित कर रही हूँ। राकेश खत्री जी, मैं जितना मेरी वोकैबुलरी नहीं है, जितना कि मेरी भावनाएं हैं और हम सभी की भावनाएं हैं, कि जिस तरह की उनका पूरी व्यक्तित्व है, जिस तरह की मानसिकता है, जो जिस तरह की काम कर रहे हैं, वो तो हमको बहुत बहुत जबरदस्त लेसन्स देते हैं। खाली उनसे बात कर लें तो हमको समझ में आता है कि जिंदगी वास्तव में कैसी होनी चाहिए, जिंदगी के सत्य क्या है और जिंदगी के शाश्वत मूल्य क्या है। राकेश खत्री जी, मैं बहुत ऋणी हूँ आपकी कि आपने अपना समय यहाँ पे दिया है। मेरे सभी साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जो मेरे नाबार्ड के साथी हैं, राजीव अग्रवाल जो मेरे पार्टनर हैं, जो हमेशा मेरे साथ होते टीम सदस्य की तरह, जो हमेशा जुड़े रहते हैं, मेरे सारे स्कूल के जितने सदस्य हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, श्री के गुप्ता जी जो रिटायर्ड सीजीएम रह चुके हैं नाबार्ड के, निमलेकर जी और LM जोशी जी, विद्युत, और इसके अलावा बहुत सारे और साथी जिनके शायद मैं इस वक्त नाम नहीं ले पा रही हूँ, श्याम गर्ग, और special mention to my Shubham, who's awake till late night just to be there and to give me this feeling that he's with me, connected to all through these 15 years. Anil ji, who's been a part of it always, Augustine, who spreads, even Prasad, Manoj Kakkar ji, all of you. I may miss out a few names, but you're all there with me always to stay connected. Joshi ji, who's been since beginning. Abhi, now I can see many people who are there. So मैं उनको अपना कृतज्ञता जाहिर करना चाहती हूँ और ऋणी हूँ कि वो हमारे साथ हैं। ये माथुर साहब स्पेशली LMA के जो हमारे रहे हैं, मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैंने शुरुआत करी थी, जब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कैसे करूंगी, तो किस प्रकार से माथुर साहब ने अपना LMA के माध्यम से मुझे अपना सपोर्ट दिया था और मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैं और वो हमेशा से इसके लिए भला सोचते रहे हैं, इसको इम्प्रूव बनाने के लिए उनको कभी भी जो भी आइडियाज आए उन्होंने दिया है। माथुर साहब, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आप इतने समय से मेरे साथ हैं, और हम सभी को, सारे जितने भी लोग हैं जो इससे जुड़े, मैं उनका विशेष कृतज्ञता जाहिर करते हुए उम्मीद करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहें, ब्लेस करते रहें, क्योंकि ये ब्लेसिंग एक वातावरण क्रिएट करती है। आपने क्रिएट किया है ये सारा वातावरण, मैं खाली एक साधन हूँ और मेरा नाम आता है क्योंकि ऑर्गेनाइज करती हूँ, लेकिन ये मैं एक बहुत छोटी सी पार्ट हूँ, सब सारे आप सब उससे जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, मैं चाहती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जी से, क्योंकि वो जुड़े हुए हर बार जुड़े हैं, तो अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें। शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम लोगों को आपने समय रहते बताया, और आज सुबह से हम तैयारी कर रहे थे कि कैसे इस प्रोग्राम में हम शामिल होंगे, कैसे हम लोग जगेंगे और क्या करेंगे। तो हम दोपहर में सो गए थे और कि रात में हमें जगना है, मगर आपको कितना मुबारकबाद दें इसके लिए, कितना आपको कंग्रेचुलेट करें, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि इस इवेंट को 2008 में जब हम लोगों ने बात करी थी, उस समय से किसी भी चीज को, जैसे कहते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी इज एन इशू। अब हम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी
आपका इतना बढ़िया मास्टरमाइंड आप हैं कि आपने जिन पिलर्स के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, जो मेंटोर्स आपने चुने हैं वो जो 2008 में थे वो 2022 में भी हैं, जो प्लेयर्स आपने टीम में रखे थे वो जो 2008 में थे वो 2022 में भी हैं। तो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉर्म किया, कितना बढ़िया डिजाइन आपने किया, कितना अच्छी तरह से उसको स्टीयर किया है कि एक बच्चा जो हमारे पास 2008 में 12 साल का था, आज 14 साल के बाद वो 26-27 साल का हो गया और वो मैसेज को कैरी कर रहा है। और वो मैसेज आप देखिए, हम लोगों ने पानी की बात करी तो हम लोगों ने पानी की बूंद की भी बात करी। एक प्रोग्राम में हमने सुना था, आबिद सुरती जी को आपने बुलाया था और वो पानी की ड्रॉप के ऊपर सीलिंग करते थे कि किसी के घर में नल टपक रहा है तो बॉम्बे में वो नल टपकना बंद करते थे। फिर कहीं आपने नदियां सूख रही हैं उसको एड्रेस करा इस फोरम में, जब हमारे पास राजेंद्र सिंह जी आए, वाटरमैन राजस्थान से, जिन्होंने एक रिवर दोबारा से पैदा कर दी थी। इसी तरह से आपके साथ हम लोगों ने और हमारे बच्चों ने अंटार्कटिका का ट्रेवल किया। मिशन अंटार्कटिका के ऊपर हम लोगों ने लंबा डिस्कशन सुना था, वीडियोस देखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने अच्छे अच्छे हम लोगों ने स्पीकर चुने। आज जैसे देखा राजेश खत्री जी को, राकेश खत्री जी को, इतना बढ़िया उन्होंने सस्टेनेबिलिटी यही है कि 30 रुपए में नेस्ट बनाते हैं, 30 रुपए में नेस्ट बना के आम आदमी तक पहुंचाना और वो मैसेज को कम्युनिकेट करना इस फोरम से, दिस इज समथिंग ग्रेट दैट वी आर डूइंग, तो ये इसके लिए आपको जितना जितना मुबारकबाद दिया जाए कम है। और हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए कितने महान महान लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वीएन गर्ग साहब है, मैं नमन करता हूँ। वीएन गर्ग साहब जितने इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट ऑफिसर रहे हैं, मैंने उसका पहलू थोड़ा कम देखा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने देखा है, इतने डाउन टू अर्थ है कि आप एक फोन करिए तो ही इज देयर। 2-4 बार मुझे भी मौका मिला आपको बुलाने का अपने प्रोग्राम्स में, तो मुझे 2 बार नहीं कहना पड़ा। एके माथुर साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ। एके माथुर साहब उस तरह के इंसान है कि आप इनसे कह दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम वो उनकी हो जाती है। इसी तरह से विक्रम सिंह जी हैं। विक्रम सिंह जी से आप जिस तरह से भी मिलिए, कोई ना कोई उनके पास सोल्यूशन है आपकी समस्या का और वो हमेशा तैयार हैं। तो इस तरह के जब लोग हैं तो इस प्रोग्राम के बारे में हमें कोई कहीं पे कभी कोई डाउट नहीं होता है कि ये प्रोग्राम हमारा 2022 में चल रहा है तो 32 में भी चलेगा और 42 में भी चलेगा और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक चलेगा और हमारे बाद ये बच्चे चलाएंगे। जिन बच्चों को हम आज बता रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, वो चलाएंगे। तो इलॉन मस्क क्या करेंगे उसकी फिक्र नहीं करने की जरूरत है। हम स्वयं सिद्धा में अपने बच्चों को तैयार करेंगे, अपने देश में तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे ही इसको स्टीयर करें और हम अपने प्लेनेट को छोटे छोटे इनिशिएटिव से जो डुएबल हैं, देयर आर बिग इनिशिएटिव्स दैट वी कैन नॉट डू, बट नेस्ट तो हम बना सकते हैं, पानी तो हम बचा सकते हैं, कूड़ा तो हम सड़क पे नहीं फेंक सकते, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू. So I think this platform has been communicating excellent message to the society, excellent message to the children, and through children we are developing a new community. And kudos to you. Thank you so much for organizing this event, and we will always be part of it. My children are here, we are here, and whatever help that we can do, we will certainly provide from here. Thank you so much. Thank you so much for inviting us for today. Thank you so much, Anil ji. In fact, that is the great thing which happens that आप करते कुछ नहीं है लेकिन आपको क्रेडिट मिलता है और हम सब मिल करके करते हैं तो क्रेडिट हमको मिल जाता है। ये एक बहुत ही ग्रेट चीज है। थैंक यू सो मच। मैं विशेष धन्यवाद आर कुलकर्णी जी को भी दूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र से जुड़े रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से पंकी सूद जो जुड़े रहे, ऑगस्टिन मुझे मालूम है अभी नाउ आई कैन सी हिम समवेयर इन द एयरपोर्ट बट ही इज करेक्टेड। ऑगस्टिन इज वन अगेन, ही इज आल्सो द वन ऑल जिनके बिना मुझे लगता है क्रिएटिविटी तो आने वाली नहीं है, जान नहीं आने वाली है हमारी कॉन्टेस्ट में। सो he has been there. जोशी सर का स्पेशल धन्यवाद। मैं जानती हूँ उनकी तबीयत खराब रही है लेकिन वो हमारे साथ हैं और रहे हैं इस इवेंट में। सर वुड लाइक टू से समथिंग बिकॉज आपके कुछ वर्ड सुन के बहुत हम प्रेरित होंगे, अच्छा लगेगा। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए।
मुझे 2008 का वो दिन याद आता है जब शिखा जी ने मुझे फ़ोन किया कि वो ऐसा ऐसा सेमिनार कर रही हैं और मुझको रिक्वेस्ट किया लेक्चर देने के लिए। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा कि आप सेमिनार किस लिए कर रही हैं। इन्होंने जो जवाब मुझे दिया वो ऐसा था कि उस दिन से मैं इनके साथ जुड़ गया। इन्होंने कहा कि मैं अपने फादर की याद में इस सेमिनार को कर रही हूँ because he was an environmentalist, so I want to continue his legacy. That sentence literally brought tears to my eyes and I said okay, I'll be there. And मुझे ये भी याद है कि उसी दिन अनिल शुक्ला जी से भी मुलाकात हुई थी बीरबल सानी ऑडिटोरियम में. So all those associations in beginning have been continuing and it is really great. This year I'm sorry I could not participate because of the COVID, but I hope I'll be there next year. Thank you. थैंक यू सर. कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें जब आते हैं, जुड़े हैं और रहे हैं, वो हमें फेथ प्रदान करते हैं, वो हमें ये एश्योरेंस प्रदान करते हैं आप हैं तो सब कुछ ठीक होगा, और आप उन्हीं में से एक है. मैं सभी को फिर से शुक्रिया करते हैं, मेरी टीम मेंबर्स को विशेष शुक्रिया करती हूँ. राजीव अग्रवाल जो बहुत दूर बैठे हैं अमेरिका में इस वक्त, वो पूरी तरह से जुड़े रहे हैं जैसे कि जब वो यहाँ होते थे, मेरे साथ होते थे. विद्युत बासु जो मेरे साथी हैं वो भी जुड़े हैं. आशुतोष मेरा छोटा सा यंग मेरा टीम मेंबर है, वो मेरे साथ जुड़े हैं. राजीव सिन्हा वो जुड़े हुए. मैं इन सभी को धन्यवाद देते हुए अब इवेंट को क्लोज करती हूँ. और आप सभी और विशेष मैसेज मेरे सारे बच्चों को सभी को देना चाहती हूँ कि जो माता पिता हैं उनकी अहमियत कोई ऐसी उम्र नहीं होती जब नहीं होती है. जब बच्चे होते हैं तब तो वो हमको पालते ही हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं और जितना इवन जब बूढ़े हो जाते हैं तो और भी ज्यादा वो हमारे लिए अहम होते हैं. तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो जब जितने बूढ़े होते हैं उनकी उंगलियों में शायद उतनी ताकत नहीं होती, पर जब वो आशीर्वाद देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्तियां समझ के अंदर आ जाती हैं. तो मैं सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ और ये पुनः बताती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रकृति का ख्याल रखें और प्रकृति के सभी अंगों का ख्याल रखें. वही हमको जिंदगी प्रदान करता है, वही हमको शाश्वतता प्रदान करता है. पुनः नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और इसी के साथ इस इवेंट को विराम देती हूँ. धन्यवाद.